Hi, this is my day 22 and I miss 8 days. 8 days and I make this video on day 22. But one thing I say to myself and also to you, why I uploaded video now after 8 days. I'm missing 8 days in my journey. I'm not thinking about this. Why I recording again? But I tell to you one thing. Hard work is not hard. Hard work is boring. Think again. Hard work is not hard. Hard work is boring. Why? If you do something, if you want something, and if you go according to your plans, according to your motivation, according to your everything, according to the plan, and you first start, if you need to, before you starting, you need to courage to start. Then you start something. You do you whatever you do, whatever you want on the path. You do something at pace, one day, second day, third day, fourth day, then you continue your journey. But in doing, a stage comes when you feel boring. When you feel boring, not hard. Think again. When you feel boring, not hard, because whenever you feel this is hard for me to start, but when you start, it is not feel you it is not feel you difficult, because it's become routine to you. It's become routine to you, and you are doing hard work again and again. Whenever you do something again and again, it feels like routine. Whenever you lose uh, interest on doing, you feel boredom. And it is the dangerous thing when you feel boredom, कि अगर आप कोई चीज़ करके ऊब जाते हैं कि मैंने इतने दिन कर लिया इस चीज़ को, अब इसको कंटिन्यू कैसे रखना है, चाहे कैसा भी समय हो. हर समय तो मोटिवेशन रहेगा नहीं ना. हर समय कोई भी, हर दिन आपका मोटिवेशन का लेवल एक जैसा नहीं रहेगा. मोटिवेशन का लेवल डाउन भी होगा और डीप डाउन भी होगा. इतना भी डाउन हो सकता है कि आप उस चीज़ों को कंटिन्यू ना रख पाए उस बोर्डम में. लेकिन अगर आप सस्टेन कर जाते हैं उस चीज़ को, तो आप कई लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं. क्योंकि कुछ लोग सिर्फ 5-6 दिन कराया और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने कराया. उसके बाद में जो नो एक्साइटमेंट, नो थ्रिल, नो काइंड ऑफ डोपामिन रिवॉर्ड. यू नो अबाउट डोपामिन? I will tell this about also in other topic. So whenever you feel I do this work and I am that stage, I feel boring, don't quit. Stay with consistency, stay with discipline, and continuing it, because it's not a stage of boring, it's stage of patience. I think hard work is not test your strength. Hard work is test your patience in difficult times, in boredom times. Whenever you feel boring, don't quit. Showing every single day. Whenever you feel low, you need to showing every single day. Simple. Showing is the only constant for yourself. So what about I talk about dopamine system. जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो आपको सबको पता है कि डोपामिन जो है वो एक रिवॉर्ड सिस्टम है हमारा ब्रेन का. हम कुछ भी चीज़ें ब्रेन को फीड करते हैं, तो अगर डोपामिन को नहीं पता है कि ये कहाँ से आ रहा है, हमारे ब्रेन को पता नहीं कि डोपामिन कहाँ से आ रहा है. लेकिन जब हम
इंस्टेंट तरीके से स्क्रॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, और जब हम शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी देखते हैं तो हमारे जो इंस्टेंट जो प्लेज़र होता है, रिवॉर्ड सिस्टम वाला, वो हिट करता है। और जितने ज़्यादा हम दिन में डोपामिन हिट करेंगे, हमारा जो बेस लाइन है डोपामिन का वो डाउन हो जाएगा। इसलिए हमें जो रियल डोपामिन लेना है वो वर्क करके लेना है, ना कि इंस्टेंट स्क्रॉलिंग, लाइक एंडलेस स्क्रॉलिंग, और जस्ट मतलब हम डोपामिन के मतलब उस ट्रिप में नहीं आना है कि हमें डोपामिन सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉलिंग से, सोशल मीडिया कंजप्शन से और ऐसी चीज़ों से आ रहा है जहाँ पर इंस्टेंट तरीके से हो रहा है जो काम भी हो रहा है। इसलिए हमें उस पर फोकस करना है कि हमें जो भी डोपामिन है वो डोपामिन डिटॉक्स आपने भी सुना होगा, उस पर भी फोकस करना है। अब बहुत सारी चीज़ें हो गई फोकस करने वाली, लेकिन मैं एक चीज़ पे खुद कमिटेड हूँ कि चाहे मैं दिन मिस करूँगा, मे बी I miss days, but I will not quit. I will tell you one thing to you. I know one thing about me and my mindset, that I will not quit. I will not quit in 2026. I will continue at every cost because I have no other option of quitting things, quitting those things what I started currently, and I'm not quitting. I'm still showing up whenever I feel low, difficult, hard, but I will show up every single day. Sometimes I miss day, but I will not quit. But I will say myself again, do it. Just do it. Whenever you feel like it's hard, do at that time. And I'm not thinking about how my days are. I'm focused on two things: discipline and consistency. And third things, I will every time I believe God's plan. God's plan. It's in my hand, just only doing. In my hand, doing my karma. I'm not thinking about rewards. I'm doing every single day. So stay with me. This is my day 22. I try my best to showing up every single day. In that, if I miss days, doesn't think I will quit. I miss days, but I will not quit. I will showing up again and again till by the best version of myself to become. And I tell you, I will not quit. I will not quit. This is day 22 and I will come back.